Hi. Hey guys, welcome back to my channel. I am Nemo, and if you're new to this channel, welcome. And if you're someone who has been watching me, so welcome back and thank you for your support. And today we will be oil cleansing. Yes, started oil cleansing like 6 7 months back. I did not know how to do it properly, so initially I did break out a little after introducing oil cleansing. But when I once I saw the results, they are amazing. In your nighttime skincare routine, it is suggested कि आप double cleanse करो क्योंकि एक तो आप sunscreen use करते हो and secondly आप बाहर रहते हो बहुत pollution, dust and all the pores जो होते हैं they do get blocked. So I started oil cleanser. उससे पहले आई वॉज यूजिंग माइसलर वाटर. आई लव टू माइसलर वाटर के रिजल्ट ऑल्सो. बट माइसलर वाटर क्या करते हैं ना, आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करता है, मुझे ऐसा फील हुआ एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ. सो दैट्स व्हेन आई स्विच्ड टू ऑयल क्लेंजर. बट मैं डर रही थी, मुझे लग रहा था ब्रेकआउट्स होंगे और ब्रेकआउट हुए क्योंकि आई वॉज नॉट डूइंग इट प्रॉपरली. एंड हाउ यू सपोज टू डू इट, लेट मी शो यू. So without any further ado, let's get into the video. Let's get started. I'm using this. So yes guys, let's get started. So this is how much I've used it and I realized कि मुझे ऐसा लगता था कि this would be another expense कि यार पहले सीरम खरीदो फिर ये खरीदो. But then I got to know that ये चलते हैं, this would last you. I've been using it and इतना ही मैं use कर पाएंगी क्योंकि you only need one pump. Okay, so first thing first, you'll have to wash your hand. Always wash your hand before you start washing your face or doing your skincare. Remember कि आप if you'll wash your hands, तो अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो nothing bacteria, germs, gandagi would get to your face and wouldn't disrupt your beautiful skin here. So yes guys, सबसे पहले take one pump and then do this. Like if you'll start using oil as a cleanser, like जब आप रात को डबल क्लेंस करके सोते हो और you do use a oil cleanser, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आपका पूरे दिन का कुछ भी डर्ट या गंक होगा एक तो वो निकल जाएगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे. सो व्हेन यू डू योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन या फिर आप कोई सीरम या मॉइस्चराइजर कुछ भी लगाओगे, दैट पेनिट्रेट डीप एंड दैट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स. इसीलिए व्हेन यू डू डबल क्लेंजर और ऑयल क्लेंजर प्लस फेस वॉश, तो उससे क्या होता है ना, आपकी स्किन टेक्सचर और भी ज़्यादा बेटर होता है. दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड. सो इनिशियली जब मैं ऑयल क्लेंजिंग कर रही थी, सरप्राइज थी, मतलब इतना कैसे आ रहा है, मैं तो रोज मूड हो रही हूँ. So once you've applied and massaged your face oil से, this is a very important step, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कर रही थी और इसलिए मुझे breakouts हो रहे थे. And then what you're supposed to do is put water on your hand and do this. This process is called emulsification. So that what you're doing is oily substance, you're adding water, and I'll repeat it once or twice, like adding water to my face. This is best to do in your nighttime skincare routine, like before your nighttime skincare routine. आप face wash use करते हो generally या जो भी, like do it before your face wash and see the results for yourself. In oily skin, I do not know, like I have combination skin, so it works well for me. So once that is done, I'll go in with my face wash. So, and then I'll pat my face dry because I feel कि like my nose area and this जहाँ पे extra कई बार आपको roughness feel होती है, that has started getting softer after the use of oil cleanser. Oh, I have a very clean canvas to paint upon. ये जो skincare concern रहे हैं, that has been pigmentation on this area and this area. Have few nights when I used tretinoin, उसके लिए I did make a video, separate video. There are 2-3 videos on my page, and it's when I'm not using tretinoin, this would be my skincare. So first I'll go in with my toner. So this is from Ordinary and this is glycolic acid. If you are someone जिसको बहुत ज़्यादा pigmentation का problem है, if it's in your face, underarms, your knee area or your elbow area और अपने neck के पीछे, you can get this one bottle. This would cost you I think 1200 या 1300 की है, लेकिन ये बहुत लंबी चलेगी. I think 6-7 months it can last you, so it will be worth your money. So take a few drops. The only instruction is
कि एक बार पैच टेस्ट कर लेना यूज़ करने से पहले, क्योंकि इट्स अ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एंड सेकेंडली अपने आई एरिया से फिर मत लगाना। सो दिस वुड बी माई फर्स्ट toner. Then I'll go in with my second toner, which is this one. This is from Tony Moly, and ये ceramide toner है, इसमें ceramides है. So this is more hydrating in nature. जब भी लगाती हूँ मुझे ऐसा लगता है my skin is dancing, like happy dance. Once your face is dry, then I'll go in with my serum. So this is a serum I tried. And this is Revive serum. इसमें ginseng है और snail mucin है. I'll do this and tap it on my skin. I think ये ज़्यादा effective है if you want to apply your products and you want them to work. वो डार्क सर्कल्स का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, अभी भी if you see डार्क सर्कल्स हैं. So what I do is कि मैं सेपरेट आई क्रीम तो यूज़ करती हूँ, पर जो भी कामिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आई डू ट्राई कि मैं यहाँ पे स्पेशली आई डू अप्लाई अराउंड माई आई एरिया. देन आई गो इन विद माई सेकेंड सीरम विच इज़ दिस. और इसमें पेप्टाइड्स हैं और अमीनो एसिड्स विच इज़ गुड फॉर ओवरऑल हाइड्रेशन. एंड जब से आई एम यूजिंग इट मुझे लग रहा है कि मेरा स्किन टेक्सचर और भी ज़्यादा बेटर हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है पेप्टाइड्स थोड़ा सा लाइक वंस यू हैव डेल्ट विद योर पिगमेंटेशन एंड यू हैव डेल्ट विद द साइंस ऑफ योर जो भी आपके कंसर्न है कि भाई रिंकल्स एवरीथिंग, एंड देन यू कैन गो टूवर्ड्स पेप्टाइड. और विद ट्रेटनॉइन ऑल्सो पेप्टाइड वर्क्स वेरी नाइस. So today, because I'm not using tretinoin, I'll go in with this serum. Like I've showed it in my past videos also. This is Advanced Pigmentation Serum from Sugandha, and I've lost count of how much I've used this. So I'll spare you that information, and I'll take few drops, pat it in. So this serum has vitamin C and it has other ingredients which helps in pigmentation and everything. Like अगर आपको बहुत ज़्यादा pigmentation है, अगर आपको melasma and ऐसे issues भी है, so this serum is recommended to you. And I've used Sugandha के काफ़ी products. All those सारे products बहुत ज़्यादा effective. And when I'm applying my skincare, एक I like taking breaks between the steps, and secondly I like massaging my face. It helps. Circulation होता है and ज़्यादा absorption होता है. So that serum has went in. Then I'll go in with my moisturizer. Oh, officially winters are over, so I don't know if this is good for Indian summertime, because this is too much hydrating. I'll go in with my eye cream. This is from Beauty of Joseon. This is a Korean skincare brand और उसका आई क्रीम दिस इज. आप डार्क सर्कल्स एंड सैगिंग है आपके आई एरिया में या फिर रिंकल्स है, तो उसमें हेल्प यू. एंड वेन एवर आई एम अप्लाइंग माई आई सीरम आई टेंड टू डू दिस. See, if you're not passionate about skincare, you can simplify it for yourself. You can go in by 2 या 3 steps अपने decide करो and do it every night before you sleep. Morning you can just take 2 steps like moisturizing and sunscreen. इतना complicated करने की ज़रूरत नहीं है. And if you're not into skincare, I don't think you'll be watching my video then. But anyways, the last step would be I'll apply this Radiance face oil. My skin tend to get a little dry, so I take a few drops. Today I do go in with gua sha, but I prefer my hands more though. And that's it. And then last but not the least, almost important step, I'll go in with lip balm. See, I've tried many different lip products, but none of them works well as much as this works for me.
सो आई डू कॉन्टिन्यू इस पे आना बार बार, एंड इसके सिवाय Vaseline works. So yes guys, that was all for today ka video. So I did tell you about few products that I think are very effective for my skin, which is a combination skin. I have T-zone pe a little oily and then it's dry. Even T-zone pe it gets sometimes dry, so more inclined towards the dry skin. And yes guys, thank you for watching, and do give it a thumbs up if it was helpful to you, and subscribe to my channel below. And yes guys, see you in my next video. Bye bye.